Namaskar. Hello and welcome to Sansad TV. I am Namrata Singh and you are watching Question Hour. This show focuses on important questions raised by members in both the Houses of Parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha, members from various parties posed questions related to 10 ministries and sought responses from the respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha's Question Hour, members from diverse parties raised questions pertaining to 18 ministries and sought responses from the respective ministers. Now let's take a look at some of the questions whose replies were tabled in both the houses. Rajya Sabha member Madan Rathore asked the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying the financial outlay made for the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahi Yojana and the amount spent as of February 2025. Whether the ministry has taken steps for incentivizing aquaculture insurance, if so, the details thereof. Whether the ministry has taken steps for adoption of safety and quality system for safe fish production, and if so, the details thereof. The ministry in its reply informed the House that a new central sector sub-scheme Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahi Yojana under the ongoing Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been implemented for a period of 4 years from financial year 2023-24 to financial year 2026-27. As of now, an amount of 11.84 crore rupees has been sanctioned under the said scheme. The component of 1B of the Yojana provides one-time incentive to aquaculture farmers against purchase of insurance with farm size up to 4 hectares of water spread area. The one-time incentive is provided at the rate of 40% of the cost of premium subject to the ceiling of 25,000 rupees per hectare of water spread area of the aquaculture farm. The maximum incentive payable to single farmer is 1 lakh rupees up to farm size of 4 hectares of water spread area. For incentive form of aquaculture other than farms such as cage culture, recirculatory aquaculture system, bioflog, raceways, etc., the incentive payable is 40% of premium. This is one-time benefit on aquaculture insurance purchased for one crop cycle. Scheduled caste and scheduled tribe and women beneficiaries are provided an additional incentive at 10% of the incentive payable for general categories. The component 3 of the scheme provides financial incentive to fisheries, micro and small enterprises in the form of performance grant to adopt safety and quality assurance systems in fish and fishery products through provision of performance grants against a set of measurable parameters. The quantum of performance grant is given in the following manner. For a micro enterprise, 25% of the total investment or 35 lakh rupees, whichever is lower for general category, and 35% of total investment of 45 lakh rupees, whichever is lower for SC, ST and women-owned micro-enterprises. For a small enterprise, 25% of total investment or 75 lakh rupees, whichever is lower for general category, and 35% of total investment or 100 lakh rupees, whichever is lower for scheduled caste, scheduled tribe and women-owned small enterprises. For village-level organizations and federations of self-help groups, fish farmer producer organization and cooperatives, 35% of total investment or 200 lakh rupees, whichever is lower. Lok Sabha members Dilip Saikia and Naba Charan Majhi asked the Minister of Development of Northeastern region number of projects approved by the Ministry for Northeastern region during the financial year 2024-25 till February 2025 and share of the projects covered under the Northeast Special Infrastructure Development Scheme other than roads infrastructure along with the timeline for completion of the said projects. जो 91,000 करोड़ का बजट है पिछले वर्ष, उस बजट के प्रति 1,02,000 करोड़ का खर्चा उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है सर। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। डोनर मंत्रालय को जो माननीय सदस्य ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठित किया था ध्यान देने के लिए, जहां 2,400 करोड़ बजट का आवंटन था, पिछले वर्ष
5,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के आधार पर आज हमारे 19 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 80,000 करोड़ के। जिस उत्तर पूर्वी राज्य में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे और उनमें से 2-3 राज्यों में 65 वर्षों में एक विमानतल भी नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आज 17 विमानतल उत्तर पूर्वी राज्यों में आज चल रहे हैं सर। वाटरवेज की हम बात करें, जहां एक वाटरवे होता था आज वहां 20 वाटरवे हैं सर। और उसी के साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी में भी करीब 4,500 गांव को 4G नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में 5,500 गांव में 4,500 टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में जहां 65 वर्षों में केवल 10,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे, 10 साल में 5,500 किलोमीटर के हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई और ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर के रोड 50,000 करोड़ रुपए के आधार पर आज उत्तर पूर्व में बने हैं। और इसी के आधार पर सर जो भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, 7% हमारी GDP ग्रोथ रेट है। पर सर आपको भी आश्चर्य होगा सुनते हुए कि हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5% GDP ग्रोथ रेट नहीं है, 8% GDP ग्रोथ रेट नहीं है। हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 12% GDP ग्रोथ रेट है सर। तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी राज्य भारत को आगे ले जा रहे हैं सर। Rajya Sabha member Sandeep Kumar Pathak asked the Minister of Skill Development and Entrepreneurship whether there is any specific course or training program on entrepreneurship and business management under PMKVY. If so, the details thereof. The reach of PMKVY, up till now, 1.6 crore beneficiaries have been there. Sir, in the answer, we only spoke about the particular courses that offer entrepreneurship development specifically under PMKVY. Apart from this scheme, which is a flagship scheme, there are various other programs also that target the development of entrepreneurial thinking, out-of-box thinking, critical thinking in our student base. Sir, for instance, we have 2 institutions which are autonomous bodies working under the ministry. One is Indian Institute of Entrepreneurship, which works out of Guwahati. The second is NISBUD, which is National Institute of Small Business Development, which is stationed in Noida. Sir, in these 2 organizations, which do a number of programs working with other departments and ministries, the total number of programs, for instance, let me tell you, sir, IIE, from financial year 13-14 to 15th March 2025, 10,765 programs were conducted in 3,52,552 participants. In NISBUD, 35,689 programs have been conducted from financial year 2015 till November 2024. And in these programs, 9,22,961 participants were there. Again, I reiterate, this is only for the EAP, which is the Entrepreneurship Awareness Program, the EDP, which is Entrepreneurship Development Program, and ESDP, which is Entrepreneurship Skill Development Program. These particular programs, these are the numbers that reflect under these schemes. Lok Sabha members Chaman Ravindra Vasantrao, Sudhir Gupta and Dhairishil Sambhaji Rao Mane asked the Minister of Electronics and Information Technology whether the network of online gaming and betting in the country has taken a serious form, whether online gaming and betting platforms are also involved in money laundering and several other illegal activities, and if so, the details thereof and the steps taken by the government to put check on these platforms. The ministry in its reply informed the House that betting and gambling is a state subject under entry 34 of the list 2, state list of the 7th schedule of the Indian Constitution, and state legislations define betting and gambling related offences. Therefore, as per the provisions of Article 246 read with Article 162 of the Constitution, state legislatures have power to legislate on matters related to betting and gambling. Further, police and public order are state subjects.
as per the 7th schedule of the Constitution of India. The states or union territories are primarily responsible for the prevention, detection, investigation and prosecution of crimes, including for action on illegal betting and gambling through their law enforcement agencies. Accordingly, the ministry informed that state police departments have taken preventive and penal action as per law in respect of illegal betting and gambling. To protect users in India and the Indian internet at large from the emerging harms emanating from the misuse of technologies and to ensure accountability towards law of the land, notified amendments have been made to the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 under the Information Technology Act 2000 to address various socio-economic concerns emanating from online games. The House was also reminded that the IT Rules 2021 casts specific obligations on intermediaries, including social media intermediaries and online gaming intermediaries. The intermediaries are required not to host, store, or publish any information violative of any law for the time being in force. They are also obligated to ensure their accountability. That includes their expeditious action towards removal of the unlawful information categorized under the IT Rules 2021 against the government's order or on the basis of grievances received against any unlawful information. Such unlawful information comprises any information that, among other things, is harmful to child or that is relating or encouraging money laundering or gambling, or that is misinformation, patently false information, untrue or misleading in nature, or that threatens the unity, integrity, defense, security or sovereignty of India, public order, or that violates any law for the time being in force. Section 1121 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 punishes unauthorized betting and gambling with minimum 1 year of imprisonment that may extend to 7 years and with fine. To bring certainty in the levy of income tax in online gaming sector, IT at 30% on net winnings in online games has been in effect from assessment year 2024-25. In addition, GST at the rate of 28% in online gaming has also been introduced from 1st October 2023. The supplier of online money gaming shall obtain a single registration under the Simplified Registration Scheme, referred to in the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. In addition, advisories have been issued to all private satellite television channels on advertisements on online games, fantasy sports, etc., advising all broadcasters that the guidelines issued by the Advertising Standards Council of India be complied with and that the advertisements broadcast on television adhere to the same. Rajya Sabha member Dr. Anil Sukhdev Bonde asked the Minister of Tribal Affairs number of particularly vulnerable tribal groups covered under Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Mahabhiyan and whether Ministry has launched any information or awareness campaign to enhance effectiveness of the scheme. PM जनमन जो योजना है ये पीवीटीजी डेवलपमेंट का एक नया स्वरूप में इसको लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिया है कि जो 75 पीवीटीजी देश में है जिनका फैलाव आपका 217 ब्लॉक में ये जो है इनका पूरा सेचुरेशन हो, पूरा संपूर्ण विकास हो। उस गांव का जिस गांव में ये काम शुरू होगा उसमें आवास सबको मिलना चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, अगर बिजली डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो सोलर सिस्टम में भी होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, 11 इंटरवेंशन इसमें होना है और 9 मंत्रालय इसके लिए कन्वर्ज करेंगे, उसको मिल के काम करेंगे। लोकसभा मेंबर पूनम बेन
Himmat Bhai Madam asked the Minister of Railways whether government has a long-term strategy for maintaining and improving passenger safety. If so, the details thereof. महिलाओं और विशेषकर बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रेलवे में कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब साल डेढ़ साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान किस तरह से हमारे आरपीएफ की महिला जवानों ने जिस तरह से काम किया, वो एक अद्भुत काम था। पूरे के पूरे सिस्टम में सबको एक संवेदना के साथ सेवा करने का एक काम किया। इसके अलावा 139 जो नंबर है हेल्पलाइन का, उस नंबर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करके आज एक बहुत अच्छा वॉर रूम का सिस्टम बनाया गया है हर एक डिवीज़न में, हर एक जोन में और रेलवे बोर्ड में। उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली कोई भी पॉइंट हो उसका समाधान करना, उसमें पूरा का पूरा रेलवे का प्रशासन इसमें लगता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एसी में और नॉन एसी में सभी कैटेगरीज में हर कोच के अंदर लोअर बर्थ का एक स्पेशल प्रोविज़न भी किया गया है। ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में सेफ्टी में बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है। जो माननीय लालू जी के समय में करीब 700 एक्सीडेंट साल के होते थे, माननीय ममता जी के समय में जो 400 के आसपास होते थे और माननीय खड़गे जी के समय में जो करीब 385 के आसपास होते थे, वो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वो संख्या 400 से कम होके 81 पे आ गया है। बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेहनत लगातार कर रहे हैं। हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस, ट्रेनिंग के मेथड के माध्यम से हर तरीके से हर प्रयास करके और भी एक्सीडेंट्स को कम करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी लगातार है। अभी जो नए न्याय संहिता के तीनों कानून आए, उसमें एक 0 FIR का प्रोविज़न भी है। तो आरपीएफ और जीआरपी, सभी राज्यों की, हर राज्य की अलग अलग जीआरपी होती है, उनके बीच में लगातार संवाद चल रहा है और दोनों के बीच में संवाद के माध्यम से एक 0 FIR वाला जो मैकेनिज्म अगर हर राज्य में जैसे जैसे न्याय संहिता का अनुपालन होने लगेगा, वो होने से माननीय सांसद महोदया का जो विषय उठाया है, वो विषय का समाधान निकलेगा। Rajya Sabha member Akhilesh Prasad Singh asked the Minister of Education progress made in implementation of National Education Policy 2020 across school and higher education institutions. संविधान सभा के उपरांत जिस प्रकार के व्यापक विमर्श के साथ एक राष्ट्रीय मसौदा हमारी संविधान के रूप में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी, वैसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तित किया। व्यापक विमर्श के साथ आज सभी राज्य, भले ही जो राज्यों का उन्होंने नाम लिया और मैंने कहा राजनीतिक पोजीशनिंग है, उन राज्यों में धरातल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, राज्यों के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पिछले दिनों में इस पवित्र गृह में जब बजट की डिस्कशन हो रहा था, उसकी तथ्य मैंने सामने रखा था। मेरे दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके भारत में सरकारों के अंदर, समाज के अंदर, विशेष करके नई पीढ़ी के अंदर एक अत्यंत उत्साह की वातावरण है। तेजी से उसकी स्वीकृति दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned and thank you for watching Sansad TV.